Hey guys, what is up? So in this video, what I want to share with you guys today is an important lesson that I learned after creating landing pages and funnels that convert like at a very high, better than the industry standard. And we have done that in multiple niches. So हम लोग Facebook ads से traffic drive करते हैं, and from Facebook ads then we of course convert the traffic from landing pages, right? So I'm going to share a lesson with you from that particular, like from that experience of spending over 8 figures on Facebook ads, managing multiple accounts. Currently we are managing roughly 2 lakhs per week in ad spend. So whatever I'm sharing with you in this video is coming from that understanding and learning and experience of spending 2 lakhs per week on ad spend on Facebook ads, and consistently we have been doing it, which also means that of course the businesses we handle, the clients we are working with, they are making money. That's the reason why they are able to keep spending so much of money on ads, right? So ये उसी experience से आ रहा है. So I'll tell you what I want to share with you. Ultimately when you are creating landing pages, right, there are a lot of or sales funnels, there are a lot of different small little nuances that go inside of it, right? Like for example कि आपका ऑफर कैसा है, ये भी एक बात होती है. फिर होती है कि आप की कॉपी कैसी है, कि आपने कॉपी कैसे लिखी है, हेडलाइन कैसे लिखी है, सब हेडलाइन कैसे लिखी है, बाकी चीजें कैसे लिखी है लैंडिंग पेज पे. वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका लैंडिंग पेज कितना कन्वर्ट होता है, जिस पे रिलाई करता है कि आप फेसबुक एड्स से अपना कितना ROI या कितना ROAS जनरेट करते हो. बिकॉज एड्स तो सिर्फ वन पार्ट ऑफ द पजल है, राइट? कि एड कैंपेन स्ट्रक्चर सीख लिया, उसके बाद एक एड लॉन्च कर दी, एड पे क्लिक्स आ गए, बट उस क्लिक को कन्वर्ट कैसे करा आपने, वो कर पाए कि नहीं कर पाए. That also depends on a lot of other factors, which is your funnels, which are your landing pages, right? And then inside of your funnels and stuff, there are things like offers and stuff. So आज मैं जो lesson share करूँगा ना, it is coming from spending 8 figures on Facebook ads on understanding the psychology of selling. Because ultimately अगर आप कुछ free भी दे रहे हो Facebook ads में ad traffic generate करके, या फिर आप कुछ sell भी कर रहे हो, ultimately you are selling them on something. Either it's a product where you're exchanging some money and in return you're giving something like a product, or it could be just a freebie where you're just asking them to opt in, right? So ultimately kuch to sell kar rahe ho. So let me give you some background to selling. So when I was 17, that's when I started working. Yes. So मैं college dropout हूँ, ये reality है, and I am an agency founder today, and I'm very humbled and grateful. And but things did not come easy to me, okay? So I want to tell you this, that after being in a job for almost about 14 years, you can say roughly 15 years, मैंने sales jobs ही करी हैं throughout my career, and sales and marketing. So और मैं ना काफ़ी top performer ही होता था across the industries that I worked with during my job days. So from that experience of selling, वो same psychology यहाँ कैसे अप्लाई होती है लैंडिंग पेजेस कॉपी पे, एड की कॉपी पे, या फिर आपके फनल की कॉपी पे, या ऑफर क्रिएशन पे. आज वो सुनो, ओके? दिस इज साइकोलॉजिकल स्टफ, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू ट्रस्ट मी, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, आई एम टेलिंग यू, दिस स्टफ दैट आई एम शेयरिंग विद यू टुडे इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैंपेन स्ट्रक्चर्स. आई प्रॉमिस यू दैट. This is more important. This stuff will make you more money than campaign structures. I keep giving you a lot of value. I'm telling you, आज ये सुनना एंड तक, okay? So सेल्स की काफ़ी ट्रेनिंग आपने ली होगी, या देखी होगी, या पढ़ा होगा उसके बारे में, राइट? शायद आप सेल्स में जॉब करते हो, या आप ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, राइट? या कस्टमर के साथ काम करते हो, आप कोच हो, कंसल्टेंट हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, आप अपना शॉपिफाई पे स्टोर रन करते हो, कुछ ना कुछ सेल करते हो. तो सेल्स की ट्रेनिंग तो आपने ली होगी कहीं ना कहीं से, राइट? या कहीं से कुछ तो सीखा होगा सेलिंग से रिलेटेड. सो आज मैं बात करता हूँ सेलिंग पे, एक साइकोलॉजी शेयर करता हूँ सेलिंग की. One of the psychological principles of selling, which happens mostly during one-on-one selling, okay? And how then you can use that same psychological principle that I will share with you today, how you can use that while crafting your landing page or sales funnel copy or your ad copy. Sounds good? Let's go. So one-on-one call से शुरू करते हैं.
Now, the game about one-on-one calls is that you don't want to tell people a lot of features that your product offers or your service offers. You don't want to, because हो सकता है कि your product probably has like 10 features. Your product has like 20 features. But when it comes to one-on-one selling, you don't want to sell all the features, because then it's like too much of download, and then it just sounds like too much of work, and there's so much. And the customer, the end user, potential user, ends up getting overwhelmed and not take the decision that you want them to take, which is buy from you or do what you are asking them to do. So one-on-one selling की एक psychological principle ये होता है that you lead with questions, right? And उसके पीछे का reason ये है that you want to lead with questions and keep asking the questions till the time they themselves tell you that, hey, here are the things that I've tried to solve the same problem that I've come on this call with you for, to solve the same problem with you. So here are the X number of things that I've tried to solve the same problem. And here are the problems I experienced, or bottlenecks or challenges I experienced when I was trying to solve the same problem using those other products and systems or services, whatever it is, right? तो हम उनको तब तक उनसे बात करते रहते हैं ताकि हमें वो खुद बताएं कि हमने जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस ट्राई करे हैं उन सॉल्यूशंस में क्या कमी थी जो हमें लगता है. जैसे अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो मुझे लगता है यार मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये तरीके यूज करने की कोशिश करी थी और वो हो नहीं पाया. तो तुम मुझसे पूछते हो ऐसा क्यों, तो तुम मुझसे तब तक पूछते रहोगे ऐसा क्यों जब तक मैं तुम्हें खुद ना बता दूं कि उस प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस में क्या क्या चीजें मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कमी थी, राइट, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट या वो सॉल्यूशंस काम नहीं करे. सो हम इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से सेल्स को ड्राइव करते हैं. अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आपको जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है कॉल पे ये बता देता है कि उन सॉल्यूशंस और मेथड्स या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में ये कमी थी, तो आप जब अपना प्रोडक्ट पिच करते हो उनको कॉल पे, then you tie back to those things. Then you go back to those things and you tell them, you remember when I was asking this question, you told me that in that product, in that solution, that was not there and you thought that to be a problem and a challenge because of which you were not getting the results? Yeah? The prospect says, yes. And you go like, exactly. That is the reason why in my service, in my product, here's what we do. Understood? So this is how you drive logic. This is how you make them feel understood. You don't need to make them understand. You need to make them feel understood. उनको ये लगना चाहिए कि आप उनको समझते हो. और वो कैसे अचीव होता है? वो अचीव होता है इस तरह से. ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है. सेलिंग के पीछे, सेलिंग साइकोलॉजी के ऊपर और भी बहुत लिटिल नुआंसेस होते हैं, and I agree, but you got the point, right? And I'm pretty sure you've got it just blew your mind away what I just told you, which means that आपको सारे फीचर्स नहीं बताने होते अपने प्रोडक्ट के. आपको सिर्फ वही रेलेवेंट फीचर्स बताने होते हैं जो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो सोचता है कि यार इस चीज की वजह से मेरा जो मैं सोल्यूशन यूज कर रहा था टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उस सोल्यूशन में, उस प्रोडक्ट में ये चीजें मिसिंग थी और मुझे लगता है वो चीजें मिसिंग होने की वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था. ये प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए, आपको नहीं, प्रोस्पेक्ट को. जब प्रोस्पेक्ट को वो लगता है तो आप अपनी सेलिंग स्किल्स यूज करके जब सेल्स कॉल्स पे होते हो तो आप वही फीचर्स को देन हाईलाइट करते हो जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एड्रेस करता है. अब चलते हैं कि इस सेम अंडरस्टैंडिंग को, सेम लर्निंग को जो मैंने आपके साथ शेयर करी आज, हाउ डू यू यूटिलाइज दैट व्हेन यू आर राइटिंग लैंडिंग पेजेस एंड यू आर राइटिंग सेल्स फनल कॉपी. हाउ डू यू यूटिलाइज दोस सेम प्रिंसिपल्स टू create high converting stores, high converting landing pages, high converting product descriptions, high converting headlines? ये सारी चीजें कैसे करते हो create? Psychological principles to convert the best out of your Facebook ads. In a one-on-one sales format, in a one-on-one selling format, you have the option to speak with the customer, right? It's a two-way conversation. You are the one who is leading the conversation with questions, and you're asking them questions and they're answering. However,
when you are doing one-to-many selling, which means ads are one-to-many selling. Ads are not one-to-one. Ads are one-to-many selling. You create an ad for once and then it's talking to so many people. Sales webinars, workshops are one-to-many selling. So whenever you are doing selling in a one-to-many format, which in this example, in this lesson today, is about landing page copy and headlines and funnel copies, etc. So when you are selling in a one-to-many format, the same psychological principle that I shared with you, you want to presume. इसका मतलब कि आपको assume करना होता है कि मेरे prospects को जो existing solutions वो use कर रहे हैं, existing products जो वो use कर रहे हैं, उन products में मेरे prospects को, target audience को, उनके accordingly क्या problem लग रही होगी, और मुझे मेरे प्रोडक्ट में वो जो फीचर्स जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो ही हाईलाइट ज्यादा करने हैं. लेट दैट सेटल इन. मुझे मेरे पूरी कॉपी में, पूरी एड्स में जो भी बेनिफिट्स हाईलाइट करने हैं वो सिर्फ वो ही बेनिफिट्स होने चाहिए जो मेरे प्रोस्पेक्ट एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स जो अभी वो यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में जो उनको कमी लगती है वो चीजें ही मुझे assume करनी है as if I am doing a one-on-one sales call, and then address those things and those benefits throughout my ad copy, throughout my landing pages, throughout my headlines, throughout my sales funnel copy, throughout my sub headlines. And that is how you convert the most amount of people, the most amount of traffic that you generate from Facebook ads. After spending 2 lakhs per week, I can tell you that it's not about campaign structures only. Campaign structures important होते हैं, मैं deny नहीं कर रहा हूँ, but I'll tell you, a lot of people think like that, but the truth is that I feel that it's 20-30% about campaign structures and media buying strategy, 20-30%, and like 70-80% it's all about these psychological principles. You need to know how to write an offer, you need to know how to create an offer, you need to know how to write a landing page copy, how to write a sales funnel copy, how to write your ad copy, how to script your ads, what are the things you need to say in your ads. और ये सारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक इस प्रिंसिपल से आती है जो एक्चुअली वन ऑन वन सेल्स कॉल्स की साइकोलॉजी से है. बट यू कैन एक्चुअली यूज दैट सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल by understanding, okay, so that's how you sell through one-on-one. Correct, that's how you sell through one-on-one. And but that's the same psychological principles you want to keep in mind when you are crafting a landing page, a sales page, a funnel, writing an offer, writing a headline, that you want to bring those things up that the audience are already using and they, according to them, feel is the problem in the other solutions that they are using. Because I see people make this mistake and I work with so many clients. उनको ये लगता है कि वो भूल जाते हैं कि यार जो आपके prospects हैं ना, जो आपके customers, potential customers हैं, समझो इस बात को, वो already कुछ ना कुछ use कर रहे हैं guys. They are already using some product or some service which is similar to you to solve the same problem that you are solving. So why do we forget that when we are writing ads, and especially when we are writing landing page copy, sales page copy, funnel copy, because ultimately Facebook ads से तो आप traffic generate करोगे, बस traffic को convert कितना करोगे वो किस चीज पे डिपेंड करता है, सोचो कभी, right? और तभी बहुत लोग अपने रिजल्ट्स नहीं ला पाते फेसबुक एड से. और मैं आपको बता रहा हूँ, I don't like, you can choose to believe me or not believe me, the choice is yours, but I can tell you out of my experience, 8 out of 10 times whenever I audit someone's ad account and I look at why they are not getting results, 8 out of 10 times, 8 times the problem is usually with their offer, with their sales page, with their copy, with their presentation of the things they are saying, how they are presenting the offer, their product, their service. वहाँ problem निकलती है. Ads में क्या बोल रहे हैं, किस तरह से उसको position कर रहे हैं. 8 times out of 10, those are the real challenges that people have, and people fail to realize it. उनको लगता है कि मैं कोई secret button दबा दूंगा Facebook ads में और बस अब पैसों की बारिश हो जाएगी. I wish ऐसा होता हो, but होता नहीं है. अब देखो मेरी बात सुनो. Ultimately, you want to do this business because you want to run ads because you want to make money, right? Whether you do it for yourself or you do it for your clients, ultimately you want to run ads, you want to drive traffic so that you can sell more of things that you have to sell, which means you want to make more money. You want to be proud of the business that you're building or you want to build, right? You want to be proud of yourself. You want to make your family proud. So, us understanding say,
एंड आई टोल्ड यू दैट आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 17. सेल्स प्रमोशन से स्टार्ट किया था मैंने. पेट्रोल पंप पे पैम्फलेट्स बांटे हुए हैं मैंने. लाइक उस लेवल से मैं आ रहा हूँ सेलिंग की साइकोलॉजी से, ओके, और एक्सपीरियंस से. टुडे आई एम 36 years old and about to turn 37, and I can tell you from my experience that this is what it is that I just shared with you in this video. It is one of the most important videos. If you have seen this video till the end, let me know by replying to it, like in the comments or whatever. Because मैं बता रहा हूँ आपको सबसे important concept यही है जो मैंने आपसे share किया है. And if you truly want to build a business that you're proud of, make your family proud, make a lot of money, become successful, get results for yourself, for your clients, live a life with peace, right? That you every day you wake up and you don't have to worry about money. You don't have to worry about money कि पैसा कहाँ से आएगा to run ads. Results आ रहे हैं. तो उस अगर वो चाहते हो तो आज जो मैंने इस लेसन शेयर किया इस वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करना. ओके, बैठ के सोचना मत, कहीं नहीं पहुंचोगे. एक गूगल डॉक्यूमेंट खोलो. That's the way I work. Open a Google document, a plain Google document. Open it up, pull it up. Start writing what I told you, which means कि अब सोचो कि आपके कस्टमर्स की एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स वो क्या यूज कर रहे होंगे आपकी मार्केट में. फिर सोचो कि उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स सॉल्यूशंस में क्या चैलेंजेस उनको फील हो रहा है कि चैलेंजेस है. आपको नहीं, उनको फील होना चाहिए. व्हाट आर योर कस्टमर्स सेइंग एंड फाइंडिंग टू बी चैलेंजिंग इन द सॉल्यूशंस दे आर यूजिंग. राइट दोज डाउन. And that's the reason why we do market research. Whenever we take over an ad account, we spend the first 2 weeks, if not more, 2 weeks just to understand the market. That's the importance of it. And that's why our success rate is astonishingly high than any other agency. I don't know about other agencies, but I like to believe like that कि हमारा better है. So, चलो ठीक है, बाकी भी अच्छा काम करते होंगे. More power to them. But I'm just saying कि ये सब करना पड़ता है. Okay, I hope this video helps and I'm going to see you in the next one. Have a good day. Bye.